Good morning, students. Today your second video is moving. Today talking about winter in the southern hemisphere and summer in the northern hemisphere. Let's we go start your second video. Part of geography. Motions of the earth. Earth का परिवर्तन. You must have observed the changes in the amount of heat and light received by the earth with changing season. आपने देखा होगा बदलते मौसम के साथ पृथ्वी को प्राप्त होने वाली गर्मी और प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होता है. Have you ever wondered why this changes occur? Look at the diagram showing season in the northern hemisphere. क्या आपने कभी भी सोचा है कि बदलाव क्यों होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में मौसम दिखाने वाले डायग्राम का देखो. Earth is inclined the same direction throughout the orbit. However, the distance between the Earth and the Sun changes during the course of revolution because of the elliptical nature of the orbit. इसमें पृथ्वी अपनी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्रांति के दौरान कक्षा की अंडाकार प्रकृति के कारण बदल जाती है. The hemisphere that tilted toward the sun is warmer because it received direct sunlight while the other hemisphere received the slanting rays of the sun. ये गोलार्ध जो सूर्य की ओर झुका हुआ गर्मी है क्योंकि ये सीधे सूर्य के रोशनी मिलती है, मतलब सीधी धूप प्राप्त करता है, जबकि अन्य गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणों पड़ती है. During summer, the northern hemisphere receives more light and heat, and the rays of the sun strike that part of the earth directly, making it is hot. During winter, it receives less sunlight and heat. गर्मियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध अधिक प्रकाश और गर्मी प्राप्त करता है क्योंकि सूर्य की किरणों पृथ्वी के उस हिस्से पर सीधे हमला करती है. इसे गर्मी कर रहा है. सर्दियों के दौरान एक कम धूप और गर्मी प्राप्त करता है. The hemisphere tilted towards the sun has longer days and shorter nights. That's why they are longer during summer than in winter. Therefore, the revolution and tilt of the earth axis are responsible for different seasons at different places on the earth. सूर्य की ओर झुके गोलार्ध में दिन और रात कम होता है. एक कारण है कि सर्दियों की तुलना में गर्मी के दौरान दिन लंबे होते हैं. इसलिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मौसम के लिए पृथ्वी की दूरी की क्रांति और झुकाव जिम्मेदार है. So, the revolution of the earth around the sun and the axis responsible for occurrence of the season and their change. The seasons are directly related to unequal length day and night. The four seasons that experience occur during the course of year. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, the southern hemisphere is tilted away. They explain why this hemisphere have opposite season. Based on the position of the during revolution around the sun, we can observe some interesting phenomena related to the change in the amount of timing of daylight received by each hemisphere. These phenomena occur different seasons and are referred to as solstices and equinoxes. हमको निरीक्षण कर सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर इसकी क्रांति के दौरान पृथ्वी की स्थितियों के आधार पर प्रकाश की मात्रा, समय में परिवर्तन,
संबंधी कुछ दिलचस्प घटनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। ये घटना विभिन्न सीजन में होती है और इन्हें संक्रांति और विषु कहा जाता है। Solstices and equinoxes. The solstice means the time when the sun is directly above the Tropic of Capricorn or Tropic of Cancer. Next, we are going to study solstices. Solstices. The word solstice comes from the Latin words sol meaning sun and stitium meaning to stand still. The solstice occurred ये शब्द ये लैटिन वर्ड से आया गया है। सॉल इसकी अर्थ होती है सूर्य और स्टिशियम मीन दैट स्थिर रहना। The solstice occurs twice in a year when the sun is furthest from the earth. The length of the days and nights are unequal during solstices. Let us look at the two solstices in detail. साल में 2 बार आयंगाल होती है। साल में 2 बार आयंगाल होती है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है। संक्रांति के दौरान दिन और रात की लंबाई असमान होती है। आइए विस्तार से 2 संक्रांति के बारे में हम जांच करेंगे। समर सोल्स्टिस। In the northern hemisphere, the summer solstice happens on June 21st, when the areas near the Tropic of Cancer receive maximum sunlight due to the tilt of the North Pole toward the sun. उत्तरी गोलार्ध में समर संक्रांति 21 जून को होती है, जब सन की ओर उत्तरी ध्रुव के झुकाव के कारण कर्क राशि के पास क्षेत्र में अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। It is the longest day of year in this hemisphere. In fact, the areas beyond the Arctic Circle have daylight for 6 months at a stretch. इस गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। वास्तव में आर्कटिक सर्कल के क्षेत्र में 6 महीने तक दिन का प्रकाश होता है। The summer means warm to hot season. The sun goes higher in the sky and stays for a longer period of time. The rays of the sun are more vertical. The sun heat also such much stronger. The 21 June, the sunrise fall directly on the tropic Cancer, and this position of the earth is known as summer solstice. It is summer in the northern hemisphere. It is the longest day here. During the summertime, the days are longer and night are shorter. Between the Arctic Circle and Northern Pole receives sunlight 24 hours a day, and the sun never sets for a few months. On the other hand, the southern hemisphere is tilted away from the sun, therefore experiences winter with the shorter days and longer nights. So the entire phenomenon is opposite in the southern hemisphere. Phenomenon of a season is the most important effect of the earth revolution. दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका हुआ है, इसलिए कम दिनों और लंबी रातों के साथ सर्दियों का अनुभव करता है, तो पूरी घटना दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत है। Next we are studying winter solstice. The northern hemisphere experiences winter solstice on 22 December when the North Pole is tilted away from the sun and receives less heat
and light from the sun. उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को शीतकाल संक्रांति का अनुभव करता है, जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुका हुआ होता है और सूर्य से कम गर्मी और प्रकाश प्राप्त करता है. दिस मार्क द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. ये वर्ष सबसे छोटा दिन है. This marks the shortest day of the year. As the winter sets in, the days become shorter and the nights get longer. The areas beyond the Arctic Circle remain darkness for 6 months during the winter. यह वर्ष का सबसे छोटा दिन है. जैसे सर्दियों के दिन छोटे होते जाते हैं और रात लंबी होती जाती है. और आर्कटिक सर्किल से परे के क्षेत्र सर्दियों के दौरान 6 मंथ तक अंधेरे में रहते हैं. So, December 22 is known as the winter solstice. On this day, sunrise fall vertically on the Tropic of Capricorn. It is a winter season in the place of the northern hemisphere and is experienced the shortest day of the year, whereas summer season in the experience in the place of southern hemisphere. 22 December, the longest day and shortest night of the year. Some such countries as Australia, Argentina, and Chile are the country that celebrate Christmas at the summer season. North Pole remains the darkness of 6th month. Meanwhile, the areas near the Tropic of Capricorn receive the more sunlight due to the tilt of the South Pole toward the sun, and hence summer in the southern hemisphere. The southern hemisphere has longer days and shorter nights. इस बीच मकर रेखा और समीप के क्षेत्रों में सूर्य की और दक्षिणी ध्रुव के झुकाव के कारण अधिक धूप मिलती है, इसलिए एक दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है. और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और कम रात होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विश्व, मतलब द वर्ड इक्विनॉक्स इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अक्नोटियम which means equal night. Twice in a year, on March 21st and September 23, sunlight fall directly on the equator, causing equal length of day or night. This phenomenon is called equinox. यह शब्द एक लैटिन अक्नोटियम आया गया है. इसके मतलब है कि बराबर रात और समान रात. मतलब 21st and 23, 21st March and September and 23 सितंबर को वर्ष में 2 बार सूरज की रोशनी सीधे भूमध्य रेखा पर गिरती है, जो दिन और रात की समान लंबाई का कारण बनती है. इस घटना को विश्व इक्विनॉक्स कहा जाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी स्प्रिंग इक्विनॉक्स. Okay, on the 21st March and 23 September, neither two of the poles incline toward the sun. The rays of the sun fall directly over the equator. So, day and nights are also equal duration of throughout the world. Average temperature are moderate. The days on March 21st and September 23 are called equinox. September 23 is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 21st March, spring season in the northern hemisphere and autumn season in the southern hemisphere. Next we are going to study spring equinox. On the March 21st, when it's spring in northern hemisphere, it is autumn the southern hemisphere. Consequently, the spring equinox occurred the March 21st northern hemisphere as the sun apparently moves northwards across the equator. This is beginning a summer in the northern hemisphere. मैंने जो आपको अभी पढ़ाया. 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में वसंत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है.
वसंत विषु मार्च में उत्तरी गोलार्ध में होते हैं क्योंकि सूरज स्पष्ट रूप से उत्तर की ओर बढ़ता है और भूमध्य रेखा को पार करता है। एक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल की शुरू होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑटम इक्विनॉक्स। The opposite of this case of September 23 is when it is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. In September, the autumn equinox takes place in the sun apparently moves southwards, and during this course, it comes on the equator, resulting in the autumn equinox. This is the beginning of winter on the northern hemisphere. 23 सितंबर का विपरीत स्थिति है। एक उत्तरी गोलार्ध में शरद और ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत है। सितंबर में शरद और ऋतु विषु होता है क्योंकि सूरज स्पष्ट रूप से दक्षिणी की ओर बढ़ता है और यह भूमध्य रेखा पर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु विषु होती है। एक उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत आती है। Dear students, your geography third lesson has completed.